শাকিব খান pan India movies রে শাকিব খান স্টার অফ বাংলাদেশ Talapati Vijay and Ajit Kumar sir irukkaru avaru শাকিব খান তোমার জন্য হ্যাঁ শুধুমাত্র সুপারস্টার শাকিব খানের জন্য আজকের এই কষ্টটুকু করলাম অফিসের কাজ বন্ধ রেখে শাকিব খানের দুইটা সিনেমার প্রমোশন করতে আমি চলে গেলাম সুপারস্টার বিজয় থালাপতির বাড়ির সামনে তো দেখতেইছেন এভাবে আমরা যাই আর আমি যে রুমে থাকি ওই রুম থেকে শুধু 7 কিলোমিটার বিজয় থালাপতির বাড়ি তো এইভাবেই যাচ্ছি আমরা তো ওইখানে গিয়ে আমরা দেখব যে কিভাবে সিনেমাটা প্রমোশন করা যায় আমার কিন্তু কোনো প্ল্যানিং নাই তো দেখতেছেন শুধুমাত্র একটা ফটো নিয়েই আমি চলে যাচ্ছি বিজয় থালাপতি স্যারের বাড়ির সামনে প্রায় কাছাকাছি আইসা গেছি তো দেখেনি যে তার ফটো এখানে আছে তাকে অনেক ভালোবাসে চেন্নাইয়ের মানুষ অনেক ভালোবাসে சார் அது லைவ் எடுத்துங்க சார் நித்யானை கனெக்ட் பண்ணாருண்ணா ஆமாம்மா சைக்கிள் சார் நெட் கேமரா ஆஃபீஸ் கேமராடா তামিলনাড়ুর বিজয় থালাপতি সুপারস্টারের বাড়ির সামনে শাকিব খানের পোস্টার নিয়ে আমি কিন্তু হাজির হয়েছি তো শাকিব খানের দেখতেছেন দরদ সিনেমার পোস্টার এবং তুফান সিনেমার আপকামিং যেটা ঈদে মুক্তি পাবে সেই সিনেমার পোস্টারটা আমি নিয়ে দেখছেন এই মাঝখানে আছে থালাপতি বিজয়ের ফটো আমি আজ তার বাড়ির সামনে বর্তমান তো যদি আপনি একজন সাকিবিয়ান হয়ে থাকেন তাহলে এই ভিডিওটি শেয়ার করবেন দেখেন এটা হচ্ছে তার বাড়ি আমরা এখানে এসে এখানে আরো মানুষ আছে দেখতে পারতেছেন আমরা তাদের কাছে জিজ্ঞাসি যে সুপারস্টার বিজয় থালাপতি এখন তার বাড়িতে আছে কি নাই কিন্তু এখান থেকে জানা গেল যে বিজয় থালাপতি এখন ফরেনে আছে তার ফিল্ম শুটিংয়ে ব্যস্ত আপকামিং সিনেমাটার নামটা অবশ্যই আমি এই মুহূর্তে জানি না এবং যে এই ডিটেলসটা দিয়েছে ওই সেই মানুষটাও কিন্তু সে জানে না যে কি সিনেমার শুটিং করতে সে ফরেনে গেছে তো যাই হোক এখানে তো হিন্দি ভাষা কেউ বুঝে না বাংলা ভাষাও কেউ বুঝে না আর দু একজন মানুষের সাথে আমি কথা বলার চেষ্টা করব যে তারা যদি বিজয় থালাপতির বিষয়ে মানে অল্প যদি বলতো আর কি খুব ভালো লাগতো যাই হোক যদি আপনি একজন সাকিবিয়ান হয়ে থাকেন তাহলে ভিডিওটা অবশ্যই আপনার শেয়ার করা কিন্তু একটা দায়িত্ব কারণ আমি আসাম থেকে আইসি চেন্নাই আইসে আমার অফিসের কাজ বন্ধ রাখা কিন্তু শাকিব খানের সিনেমা প্রমোশন করতে আমি চলে আসি বিজয় থালাপতির বাড়ির সামনে এই মুহূর্তে আপনারা দেখতেছেন তো অল্প জুম করে দেখায় দাও যে বাড়ি দেখেন অত্যন্ত উঁচা কিন্তু একটা গেট তো এখানে আমি দেখতেছি না কোনো সিকিউরিটি আছে কি নাই কিন্তু আমি আসার সময় অল্প আগে কিন্তু দেখেছি অনেক পুলিশ আছে এখানে কিন্তু গেটের ওই দিকে অপোজিট সাইডে হয়তো সিকিউরিটি থাকতে পারে এবং এই মুহূর্তে কোনো মানুষ কিন্তু দেখা যাচ্ছে না এদিকে অল্প জুম করে দেখাই তো হ্যাঁ বাড়ি অবশ্যই যদি এই মুহূর্তে আপনি এই প্রথমবার সুপারস্টার বিজয় থালাপতির বাড়িটা দেখতে পারলেন আমার ভিডিওর মাধ্যমে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আপনি লিখে যাবেন যে এই প্রথম আপনি বিজয় থালাপতির বাড়ি আমার ভিডিওর মাধ্যমে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আগে পরে আপনি কোনো ভিডিওতে দেখেন নাই তো সাকিবিয়ান বন্ধুরা এই যে এখানে একজন ভাই দেখতেছেন এই ভাই কিছু বলবে বিজয় থালাপতির বিষয়ে এবং আমি এই ভাইয়ের সাথে অল্প শেয়ার করবো সুপারস্টার শাকিব খান এবং সুপারস্টার বিজয় থালাপতির বিষয়ে তো ক্যামেরাম্যান অল্প আইয়াস আসসালামু ভাইয়া রে শাকিব খান স্টার অফ বাংলাদেশ রে விஜய் தளபதி ஸ்டார் ஆஃப் இந்தியா and ஹவுஸ் கொஞ்சம் பேசுறீங்க விஜய் தளபதி நல்ல மனுஷன் தளபதி நல்ல மனுஷர் நல்லா உதவி பண்ணுறாரு எல்லாத்துக்கு நல்லது ஆட்சிக்கு வந்தால் நல்லது செய்வார் நல்லது பண்ணுவார் எல்லாத்துக்குமே இப்போ விஜய் தளபதி இங்க இருக்கு நீ தெரியும் शूटिंग गोइट आना लियो मूवी देखा है क्या आप நல்லா இருந்துச்சு பார்க்கலாம் और ये भैया सुपरस्टार मेगास्टार बांग्लादेश अपकमिंग मूवी हिंदी रिलीज तो अन एक्चुअली लैंग्वेज प्रॉब्लम बोले कि हिंदी आया तमिल नहीं है तो थैंक यू তো বন্ধুরা আরো একজন ভাই পাইছি যুবক ভাই আমি কিন্তু তামিল বুঝি না আবার হিন্দি বুঝি না যাই কি বলে বিজয় থালাপতির বিষয়ে সেটা আমি জানবো তো আনা கொஞ்சம் பேசுறீங்க விஜய் থালাপতি டீடைல்ஸ் தளபதி விஜய் இஸ் அ பேன் இண்டியா ஆக்டர் அவர் தளபதி விஜய் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டில் வந்து ஃபேமஸான ஆக்டர் இப்போ வந்து டாப்ல தமிழ்நாட்டில் யார் இப்போ டாப்ல இருக்காங்கன்னா இப்போ விஜய் தான் தளபதி விஜய் தான் இருக்காங்க லாஸ்ட் மூவி நேம் லியோ நீ வாட்ச் this is one of the beautiful and super movie it's a director லோகேஷ் கனகராஜ் வந்து அதை டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கும் ஒன் ஆஃப் த பிளாக் பஸ்டர் மூவி தமிழ்நாட்டில் 500 crores மேலே அது பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ட் பண்ணிச்சு நல்ல படம் சூப்பர் படம் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு பேர் என்ன என் பேர் விக்டர் ஹவுஸ்
என்னோட ஹவுஸ் வந்து திண்டுக்கல். चेन्नई एरिया बाहर है क्या? அவுட்டர் சென்னை. आउट ऑफ चेन्नई। चेन्नई। और ये सुपरस्टार बांग्लादेश, एक्चुअली इसका पैन इंडिया फर्स्ट मूवी है दर्द। ओके। दर्द रिलीज हो गया। हिज नेम शाकिब खान। ஷக்கீப் கான். हाँ ஐ டோன்ட் நோ ப்ரோ, பட் இஸ் இஸ் பேன் இண்டியா மூவிஸ் நிறைய ஆக்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்ச பேன் இண்டியா ஆக்டர்னா வந்து விஜய் சொல்லுவேன், தளபதி விஜய். அண்ட் அஜித் குமார் சார் இருக்காரு, அவரும் பேன் இண்டியா ஆக்டர் தான். हाँ இவங்க எனக்கு தெரியும், நான் பார்த்துருப்பேன். ஆனா எனக்கு இந்த படம் எனக்கு 2 படமும் தெரியல, சாரி. मेरे साथ बोलना ठीक है, रिप्लाई करो। मैं शाकिब खान, ஷக்கீப் கான், আমাদের ভারত থেকে, আমাদের ভারত থেকে তোমাকে তোমাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা অনেক অনেক শুভেচ্ছা দরদ সিনেমার জন্য। দরদ সিনেমা ওদের আশা করি তোমার দরদ সিনেমাটি আশা করি তোমার দরদ সিনেমাটি ব্যবসা সফল হবে, সফল হবে। ইন্ডিয়া থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা ভালোবাসা শাকিব খান শাকিব খান তোমার জন্য। তোমার জন্য। থ্যাংক ইউ।